disk winding or power transformer. And since when I'm talking about a power transformer means that it's not going to have any voltage in less than 11 kV. I'm talking about something more than 33 kV or 11 kV or something, even 133 kV or whatever. This book does not go in a size more than 33 kV. The reason behind it is, as I told you before also, that power transformer designs are a little secret still by the industry at present. They are not given that design much in the book. In fact, I am going to give you today a small assignment of 2-3 pages in which I am going to ask you to write a little detail, maybe 1 page or 2 page for each type of winding which I am going to discuss today. Okay? So you can just Google it out, Google books and all that stuff to find out that answer with some pictures also. Today the transformer, this is chapter number, I guess this is chapter number 7 which I am talking about, and there is a 5 MVA transformer, and as you can see the voltage ratio is 33/11 kV, which means that this transformer is not going to be a distribution transformer, it's going to be a step down transformer for all the feeder lines which are going to flow, or the transmission lines when it is terminating at a grid station. From that 33 kV line or maybe 66 kV line, that is going to be stepped down to an 11 kV, and from that 11 kV line, yes, certainly 11 kV feeders are going to be distributed towards your domestic or industrial purposes over there. Now, if you can see over here, the data which is over here is this, that the connection is delta/star, and it is DYN11, and then the winding material is copper, it's not aluminium. The tappings are quite large over there. If you remember, the distribution side you only had the tappings up till like 5%. This time you have at plus minus 7.5%, so this is a little bit on the higher side, and this is why, because if the load on the 11 kV side increases, so what will happen? The voltage will actually decrease down. So you have to restore it back to 11 kV. So that's why the tappings are a little bit more. So you can see like there are 7 taps over there, including the new the zero line over there. As far as the no load and the load loss is considered, you can see this is a 5 MVA transformer. So that's why the no load losses are 5 kilowatts. The load losses are 35 kilowatts. It's a huge loss. The impedance is on the higher side. कोई बताएगा मुझे कि why the impedance is on the higher side? मैंने पहले भी इस पे डिस्कस किया हुआ है the first 2 lectures. If you remember, the distribution transformer, as far as the book was concerned, it was 4.5%, and in Pakistan, or in talking about Lahore, let's go, it was 4%. Here this is 7.15%. So why this is on the higher side? Why it is not the same 4% or 5%? ये आप तो बेसिकली आप परसेंटेज Z बढ़ा रहे हो, तो बेसिकली सीरीज में आपके ट्रांसफार्मर की जो इम्पीडेंस है ये वो है Z equivalent, which is equal to R equivalent plus JX equivalent. Equivalent means that the primary and the secondary series over there. तो ये ज्यादा क्यों है? क्वेश्चन मेरा ये है जी। या प्रोटेक्शन में मैंने आपको कहा भी था उस वक्त कि आप प्रोटेक्शन के टीचर से ये सवाल जरूर करें कि व्हाई दिस इज ऑन द हायर साइड। आंसर मैं खैर मैं दे दूंगा अभी, but still from the protection side it's also very important. Any idea? Any guesses? नहीं, तो कॉपर ज्यादा लगता है तो बेसिकली थिक कॉपर है तो उसके अंदर लॉसेस कम होने चाहिए, लेकिन हम डेलिबरेटली हम उसको ज्यादा रखते हैं परसेंटेज Z को। क्यों? From the protection side, why this is important? These are expensive transformers. You can't afford a short circuit on them. So if there is a short circuit, this percentage Z is actually going to limit the amount of current. So whenever you are going from a distribution side towards your generating transformers at Tarbela, Mangla or any power plant, you will see there is a monotonous increase of percentage Z. Even at Tarbela, Mangla, you will see that it is approximately 9% or 10% even. So the percentage impedance increases. Now the advantage is only that is the protection, the current is going to limitize, because अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर जो तरबेला और मंगला डैम के बिल्कुल एग्जैक्टली आउटपुट पे लगा हुआ है, अगर वहां पे डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होता है तो इसका मतलब है कि आपके जनरेटर की आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो रही है थ्रू द ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली अगर ट्रांसफार्मर की वहां इंपिडेंस 10% या 9% जो भी है वो वहां मौजूद है, तो बेसिकली इट्स गोइंग टू लिमिटाइज दैट करंट। सो व्हेन इट इज हैपनिंग समथिंग एट जनरेटिंग supposedly at grid station near your Lahore or somewhere else, then the current is going to be still reduced because all the impedances, the transmission line, the transformer, किससे? एक सेकेंड, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस कौन सी वाली?
the Y connected you are talking about. मतलब you are actually talking about if this is the transformer and over here, and so this means you are going to attach a resistance over there. Now practically yes, this is done. If you go towards in power protection, I guess most probably after your midterm they will talk about this grounding schemes also. यहाँ पे आपके पास होता क्या है, practically they don't actually have a resistance. What they do it is that they attach a transformer, and that transformer is going to increase that transformation ratio by a resistance over there. शायद ये discuss हो भी चुका हो आपके पास. Grounding transformer, grounding through a resistance or whatever. But still the current is going to be still huge, because this resistance, depending upon the turn ratio, whatever that is over here, or whatever the turn ratio is selected, that's going to change it. But still you need to reduce the amount of current, because हाँ किसके होंगे? अच्छा, one thing very important, ये resistance whatever this resistance value, it is going to limitize only the ground fault current. जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होंगे सिर्फ उनको ये कैटर करेगी. द लाइन टू लाइन फॉल्ट उसमें रेजिस्टेंस नहीं आएगी. सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू इंक्रीज द वाइंडिंग रेजिस्टेंस अ लिटिल बिट. और इसीलिए आपके पास यहाँ पे टैपिंग्स भी ज्यादा है, ताकि आपके पास, क्योंकि ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, आप देख सकते हो लॉसेस भी ज्यादा हैं. 5 किलोवाट्स एंड 35 किलोवाट्स इज अ बिग नंबर. ठीक है, लेकिन स्टिल यू कैन सी द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर दैट यू आर हैविंग अ टेम्परेचर राइज ऑफ द सेम वैल्यू. और इस ट्रांसफार्मर के लिए विच इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क 24 आवर्स अ डे, ये ऑफ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल पीछे से वापटा लाहौर के 78 ग्रिड स्टेशन है उसमें किसी एक ग्रिड स्टेशन को ऑफ कर दे, जो कि होता है कभी कभार इन पाकिस्तान. एटलीस्ट इट हैपेंस, फोर्स लोड शेडिंग ओवर देयर. सो दैट आर दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स विच आर विद तरबेला एंड मंगला. तरबेला मंगला की बात करते हैं. मंगला के ऊपर 10 जनरेटर्स हैं, 100 MVA ईच. हर एक के साथ में जो वोल्टेज अवेलेबल है 13.8 kV अवेलेबल. 13.88 kV को स्टेप अप करके 33 kV में कन्वर्ट किया जा रहा है, और वहां 33 kV से वो स्टेप अप होके आपके स्विच यार्ड में जा रहा है. द स्विच यार्ड जहां पे आपके पास बेसिकली बिग ट्रांसफार्मर्स हैं, जहां पे आपके सर्ज रिएक्टर्स हैं या जितने भी आपकी चीजें वहां लगी हुई हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए, वहां से आगे उसको किया जा रहा है. तो बेसिकली आपके पास वो ट्रांसफार्मर जो है, दोज ट्रांसफार्मर्स विद जस्ट विद दी generator over there, they are actually the important ones which are actually controlling कि आपके पास voltage कितनी ऊपर जा रही है. And if you can see over there, the impedance is large. The maximum flux density is actually material dependent. Most probably ये book शायद I guess 7-8 years old है, उस वक्त तक I guess the maximum flux density available. Now materials are available with are having 1.8 or 1.9 Tesla even. So you can have something like that. I guess not in Southeast Asia or South Asia even. Maximum flux density used in induction motor by the Tesla car company, they are using a 2.2 or 2.4 even. So उनकी मोटर का साइज बहुत स्मॉल है. their material is fascinating. So 1.6 Tesla कुछ भी नहीं है. आप इमेजिन कर सकते हो, you are increasing from 1.6 Tesla to 2.2, the size of the transformer can be reduced considerably. इसीलिए इंडक्शन मोटर which is used in those cars or in Tesla cars they're talking about, their size is phenomenally small, maybe the size of this bag, just in radius or whatever diameter, and that's a simple motor giving you approximately 140 to 200 horsepower. It's a huge power. Then current density 3 amperes per square millimeter, which means that certainly it's not just going to be some cooling of the oil just by the convection or this, there is certainly going to be some pump also. एक पंप लगाया जाएगा अंदर. नॉर्मली इस तरह के ट्रांसफार्मर, ये तो 5 MVA है. इफ आई गो अ लिटिल बिट बिग ऑन द साइज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 500 MVA ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ वॉल्व्स which are going to be actually involved for the inflow of the oil or the exit of the oil, there are approximately 45 valves over there just for it. And the size of a 500 MVA will be approximately double the size of this room. 500 MVA is a huge transformer, a huge one. 500 MVA का मतलब ये है कि approximately आपके लाहौर शहर की टोटल डिमांड कितनी है, किसी को आइडिया है? पाकिस्तान की तो approximately 21-20 तक चली जाती है, 21-20 हज़ार मेगावाट. तो अगर आप 500 MVA का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो इट इज अ बिग ट्रांसफार्मर. प्रैक्टिकली पाकिस्तान में शायद 1 या 2 ही हैं, शायद ज्यादा है भी नहीं. ये 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगता है जो कायदा सोलर पार्क की बात कर रहे हो? नहीं, ये अपना यूटी. अच्छा हाँ, वो यूटी वाला, सॉरी. मतलब यूटी की डिमांड है 3.1, लेकिन ये 4 साल पुरानी फिगर है.
3.1 megawatts approximately. So ये इतना हमारे कोई उसको cater नहीं करेगा. And one thing, 1 megawatt, अगर आप if you are interested in solar or whatever, whenever you use that term, they have a P written over there. That P actually stands for the connected solar panels total. 1 megawatt कभी भी वो नहीं देगा. Normally अगर आपने कभी घर में कभी को solar panel लगाना हो, multiply this by 0.702 or 701 or something figure. ये कैलिफोर्निया डिजाइन फैक्टर है जो कि बेसिकली होता है. इनके अप्रोक्सीमेटली 0.7 मेगावाट्स आप अज्यूम कर सकते हो फ्रॉम दैट सोलर पावर प्लांट इन द टाइम स्पैन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 AM to 3 or 4 PM. ये दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं. हाँ किसी टाइम में ज्यादा भी होगा, किसी टाइम में कम होगा, तो ये एवरेज वैल्यू है विच यू कैन अज्यूम over there. Plus this factor also includes that shading, soiling, or whatever factors and aging factors over there. Anyway, coming on to this one, so the temperature rise is 40/50 and other specifications are according to that one. Now the first thing first is, I'm not going to go through this one, I'm actually going to go through this one. Primary conductor. I have a 33 kilovolts, okay? I'm not going to do the calculation, this is a very simple calculation, we can just do it now. So you can see that the voltage per phase is 33,000 volts or 33 kV, and the current per phase is, since this is connected in delta, so the current per phase IP is equal to 50.5 amperes. Please one thing very important, अवल तो खैर क्विज 2 के अंदर मुझे आप लोगों को तो खैर मैंने नहीं दिया था, शायद सेक्शन ए में जो मैंने डिजाइन दिया था, स्टिल करंट सब ने सही निकाला था, लेकिन इन इवन द मिड टर्म इफ इट इज गोइंग टू बी देयर, make this calculation of the current very carefully, because the winding either it is delta or Y, then this 3 changes to under root 3 or 3. So this is very important, take very care on this one, that because अगर ये value गलत आ गई, आगे की सारी value गलत है. So this is very very important, so that the current per phase which you are trying to find out is calculated correctly. Now when you have done the current per phase, the next thing is the secondary winding. Since this is 11 kV and since this is connected in Y, so I want the per phase value, so this will be 6351 volts. Current per phase, again the same story, 5000 MVA, so I am not using K on the numerator, and 11K cancelled, so K is not there, so this is 262.4 amperes. Current density is 2.6 amperes, because this is going to be forced cool, so it's not going to be a simple air cooled or something like that. Plus there will be a fan also included. I will show you the picture also. The conductor area, if you divide it by the current area, the current per phase divided by the area, the answer comes out to be 100.92 square millimeter. Now when you have got this conductor area, I have told you previously that whenever the area increases more than 33 or 30 square mm, you are going to go towards a rectangular size conductor. Here this is a power transformer. Now the type of winding which I am going to use over here is actually, in fact let me just open this one. I should have opened before. Actually I have this windings over here, not this one, again not this one, sorry. Here are this, okay. Now the type of winding which I am going to use in this transformer is called as disc winding. Okay, now listen to this very carefully, because pictures which I am going to show you. Now if you see a disc winding, it is something like this. This is the core, okay? This is the core, and the disc starts from here. This is the first turn, second turn, third turn, fourth turn, fifth turn, sixth turn, seventh turn, eighth turn, ninth turn, 10th turn. And you can see over here, you are making this something like this. Supposedly this is the core, and you are using a rectangular conductor, and the rectangular conductor is made in such a way that you do the first turn, on the same conductor you will do the second turn, on the same conductor you will do the third turn, fourth turn, fifth turn, sixth turn, seventh turn, and like this 10 turns. Now when those 10 turns are done, you will start from that 10th turn from the opposite side. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, it starts from the outer, goes up till the inner, and then it starts from the inner, goes towards the outer. So what this happens, the winding, if it is going to be under a short circuit and the windings are going to be under a pressure to go out, the windings which are in opposite direction wounded, they will not go out, they will in fact compress the core. ठीक है, इस वाइंडिंग को करना आसान नहीं है. यह सर्टेनली आपको पहले वाइंड करने के बाद आपको फिर उसको खींचना पड़ेगा ताकि वो टाइट हो सके, बिकॉज वो अंदर वाली साइड से है. बट
this disk winding is very beneficial because if you remember, I talked about the switching impulse or the lightning impulse. For lightning impulse, he wanted to have a larger input capacitance, and that input capacitance is easily shown over here. These are disks. This is disk number 1, this is disk number 2, disk number 3, disk number 4. Now when you are going to arrange this disk over there, these disks has this conductor number 1, conductor number 2, 3, 4, 5, 6. This is the turn number 1, turn number 2. Turn number 1 is going to be composed of many number of conductors. जिस तरह से आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर था, अगर आपके पास उसके अंदर एरिया आ रहा था 200 स्क्वायर मिलीमीटर, तो आपने क्या किया था, आपने रेक्टेंगुलर कंडक्टर उठाए थे 4 50-50 के, उन चारों को इकट्ठा किया था विद सम पेपर कवरिंग, एंड देन यू डिड अ ट्रांसपोजिंग आल्सो. ठीक है, कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज कंडक्टर, CTC कंडक्टर. सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू दिस ओवर हियर. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस हियर, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो this is a simple disk winding as shown over here. But when you are going to do something like this, now if you zoom in, this is the same disk winding. I hope the picture is clear. This is the core. Okay? This is disk over here. 1, 2, 3, 4. These are the number of turns. Then afterwards, this is the second disk, third disk, fourth disk, fifth disk, sixth, seventh disk. So all these disks are having some spacing, and you are paste them over here. Now when you want to do the continuously transposed conductor, CTC conductor, then this one, when you are taking this conductor from here to here, you are taking this conductor from here to here, this is just a top view available to you. But when you want to do this one, let me just show you another picture. You are going to do something like this. I hope you are getting the idea what is being done over here. How many conductors are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 conductors making that low voltage coil or high voltage coil, and you can see what you call this conductor as conductor number 1. It is changing its position to the other layer. This one is changing its position to the other layer. This changing its position over here. This changing its position over here. So when this whole conductor, it is going to change its total orientation. This is going to change every position for every conductor. तो आपको यहाँ पे वो जो ट्रांसपोजिंग के लिए एक्स्ट्रा टर्न ऐड करनी पड़ती थी, स्पेसिंग ऐड करनी पड़ती थी, वो यहाँ नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ वाइंडिंग कॉल्ड एज डिस्क वाइंडिंग, इन विच रेक्टेंगुलर कंडक्टर्स आर यूज्ड. दैट रेक्टेंगुलर कंडक्टर कैन बी an amalgam of just one conductor, as shown in this last picture I just showed you. This one was a simple one conductor winding. Okay? This one, the next one which I just showed you over here, this has like 8 conductors over there, and this is actually one conductor, one winding turn. And when this is going to be done on the whole disc, now one thing very important यहाँ पे इस चीज को बड़ा ध्यान से देखना. When you are going to do this on the whole circular core, आपने हर कंडक्टर को हर पोजीशन पे घुमाना है. ठीक है, दिस इज वेरी केयरफुली. आपने हर कंडक्टर को हर पोजीशन पे लेके जाना है इन द होल डिस्क. सो you are going to have the disk in front of you, and that disk is going to be bifurcated, or in fact made in terms, at 12 different points. What I mean by that, listen this carefully. Let me just show you over here. If this is the view of the disk in front of you, sorry, ठीक है जी, ये आपको ऊपर से नजर आने वाली डिस्क है. This is the center of that disk. So what I will do, I will bifurcate this disk. These are 4 and 1 2 1 2 1 2. कितने बन गए? Are these 12? I am going to make them in 12 terms over here. What I am doing this, यहां पे आपके पास supposingly 4 conductors थे. ठीक है? After every point of the 1/12, you are going to change its position after every 1/12. So when you are going to complete the whole turn, you have changed every conductor. If there were 4 conductors, every conductor would have gone to each position 3 times. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये भी आगे जाके भी मैंने आगे करनी है इस बात, इसलिए इस चीज को समझ लो. I'm again repeating.
if you had 4 conductors in that low voltage conductor winding or high voltage, whatever that case may be, हमने यहाँ दोनों winding disk बनानी है, so nothing changed. So if they were like 4 conductors over here, ये इस 1/12 distance के अंदर they were taking whatever position. When they come in the next 1/12 region, they will change their position. Then the next 1/12 they will change their position. Then the next 1/12 they will change their position. So when it has completed the whole 360 degrees, since there are like 12 transition points, each conductor would have taken 3 times the same position. अब ये 12 क्यों है? क्योंकि 12 is easy. As you can see, we have a circle. So when you are actually physically making that transformer, it's easy for the layman or the worker over there, so it can have that transposition done very easily. Plus, when you are going to design, अब यहाँ पे बहुत important चीज है, when you are going to design, because of this 12 points, now this time you can have a winding design in terms of decimals also. कैसे? Listen this very carefully now. यहां पे आपके पास एक डिस्क थी, इस डिस्क के ऊपर आपने करने थे सपोजिंगली 15 टर्न. तो आप क्या करोगे? आपके पास ये कोर है, इसके ऊपर आपने ये लिया 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 5 टर्न, 15 टर्न हो गए. जहां से शुरू किया था वहीं पर खत्म किया, अगली डिस्क पे चले गए. लेकिन अगर आपको 14.833 टर्न्स भी करने पड़ जाए, यू कैन डू दैट. आपने पूरे उसको 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है. तो आपके पास पता है कि आपको 14 टर्न्स करने के बाद व्हाट इज 0.833? 0.833, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 स्टेप्स. तो इसका मतलब यह है कि जहां पे आपका 14 टर्न्स करने के बाद जब आपके पास 10 स्टेप्स हो जाएंगे, you will go to the next disk. In this way, you are going to have different points of. So in each disk, you can have decimal number, but again a multiple of or division of 12 certainly. Then you can have this number of turns also. So in power transformers, and इससे फायदा एक और भी होगा. When you have decimal number of turns per each disk, आपके पास एक डिस्क खत्म करने के बाद अगले डिस्क पे जाने के लिए डिफरेंट पॉइंट होगा. वरना क्या होगा? जस्ट लाइक दिस पिक्चर, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपके टर्न्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये अगले डिस्क पे चला गया, फिर उसके बाद दोबारा आया, यहां पे अगले डिस्क पे कंप्लीट हो, अगले वाले पे चला गया. ये सारे एक ही लाइन में है, लेकिन दीज आर दी एंटरिंग पॉइंट्स. ये देखो यहां पे लीविंग पॉइंट इधर है. So you can see here there is a difference of like 1 step or 2 step. I don't know what is actually the personal value over there, but it is starting here, ending here. Otherwise अगर ये पूरा एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होते तो ये वाला पॉइंट यहां होता. ठीक है? So in disk winding you can have a decimal number of turns or a 12 divided by 12 number of turns also available over there. And let me show you another picture. This is a similar picture of a continuously transposed conductor, and this is another type of a winding. You can see the worker actually doing this. This is not disk, this is a little type of disk winding, but here the disk does not have any spacing in between them. ठीक है? So don't confuse yourself कि जी यहाँ पे स्पेस नजर नहीं आ रही है. आप यहाँ देख सकते हो कि पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 रोल्स के ऊपर से 8 डिफरेंट कंडक्टर्स आ रहे हैं. वो उसको यहाँ रोल कर रहा है. तो एक डिस्क बनाई जाएगी, उसको ले जाके फिर बाद में कोर के ऊपर फिक्स किया जाएगा. तो द होल इंडस्ट्री वर्किंग ऑन दिस वन. ये आपको अपने वर्कर्स लगाने पड़ते हैं, so you can actually work on this one. हाँ, कोर सर्कुलर ही रहना है, because it has the advantage that you are going to have less number or less length of the winding, plus the flux is also in circular shapes of the flux lines. So certainly it's going to be circular. वो circular ही होगा, वो सारा कुछ वही है. Core design remains the very same. इसमें कोई change. मतलब वो नहीं प्लेट नहीं ऐड करेंगे जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं. क्या मतलब प्लेट से क्या मतलब? मतलब स्टैकिंग वगैरह नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, सब कुछ होगा. The core is going to be stepped everything. मैंने कहा ना, जो चीज आपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोर में कर दी है तो सारी यहाँ एप्लीकेबल है. बल्कि इनफैक्ट इस चैप्टर में उन्होंने की भी नहीं है, तो आपको खुद ही वही रेप्लिकेट करनी है द लास्ट वन. यहाँ पे सिर्फ वो कोर का डायमीटर निकाल देते हैं एंड देन इट्स अवेलेबल टू. ओके, नाउ बिफोर आई गो ऑन फर्दर, एक चीज छोटी सी. दिस इज टाइप ऑफ एन इंटरलीव्ड डिस्क पेयर. यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. अब ये वाइंडिंग बहुत डिफिकल्ट है इसको करना, बट द एडवांटेज इज एनॉर्मस. आप देख सकते हो नंबर 1 के बाद 9 आ रहा है नजर, फिर 2 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 5 6 7.
यहां पे दो डिस्क आपस में इंटरलीव्ड है। The advantage is enormous because 1 और 2 के दरमियान में अब गैप आ गया, 2 और 3 के दरमियान में भी गैप आ गया, 3 और 4 के दरमियान में भी, 4 और 5 के दरमियान में भी इटसेल्फ एक छोटा सा गैप है डिपेंडिंग अपॉन द गैप डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क एंड सिमिलरली लाइक दिस. But interleaving is going to have a lot of input capacitance. So whenever the transformer is interleaved, again this winding is very difficult as you can see. आपने एक वाइंडिंग एक डिस्क बनानी है, आपने इंटरलीविंग फर्स्ट करो 4 डिस्क में करनी है, तो आपको पहला टर्म यहाँ गुजारा, चौथा टर्म यहाँ पे है, पांचवा टर्म इधर है, छठा इधर है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. So workmanship is very much required over there. But this is also a way of increasing the input capacitance. This is called as interleaved disc winding over here. Next thing, very much important, this is an interleave tying 4 discs per group. You can see the same thing once. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 discs per group. This is an interleave being done. Then this is also a winding. अब ये किस तरह से है, जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ. दिस इज द शील्डिंग डन विद द कोर. वाइंडिंग यहां से स्टार्ट हुई, सर्कुलर इन शेप, नथिंग दिस स्ट्रक्चर. इट गोज अप टिल दिस पॉइंट, देन इट कम्स डाउन, ब्रिंग्स द वायर डाउन, एन एयर गैप, एंड देन वापस गया ऊपर, वापस नीचे लाए. दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड एज अ रिप शील्ड वाइंडिंग और अ शील्डेड लेयर वाइंडिंग. तो मुझे बताएगा ये इसको डिक्रीज करने का क्या फायदा या नुकसान है. ये खैर मैं असाइनमेंट में भी देने वाला हूँ, लेकिन खैर जस्ट फॉर नाउ इसको थोड़ा सा इसका आंसर भी देगा. हाँ, ये पैरामीटर पर है. आपका इनपुट टर्मिनल यहां है, द लाइन शील्ड यहां पे. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, यहां फायदा क्या हो रहा है. यानी कि आपके पास ये कोर है, पहला टर्न इतना था, पहला जो लेयर आपने बनाई, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, अगला छोटा है, उससे फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है. दिस इज द हाई वोल्टेज साइड, यू कैन कॉल इट, मतलब 33 kV और समथिंग लाइक दैट. इसका फायदा क्या है? नहीं, आउटर चांस कम है, लेकिन डायमीटर ज्यादा है. ऑफ कोर्स की बात है, ये कोर से आप दूर जाते जा रहे हैं तो डायमीटर ज्यादा. करंट तो सारी वाइंडिंग सीरीज में है, करंट का कोई उस पर फर्क. तो अच्छा, आउटर में आपके पास पूरी लेयर में टर्न कम है ना, तो डीपर लेयर के निस्बत जो आउटर लेयर है उसमें ओवरऑल करंट, टोटल करंट का. ओके, ठीक है. आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली उसकी रेजिस्टेंस उस लिहाज से ज्यादा है, तो टेक्निकली इफ यू सेक्शनाइज द करंट देन इट इज सेक्शनाइज द रेजिस्टेंस, देन यू आर चेंजिंग इट. बट ये हाई रेजिस्टेंस है. व्हाट अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द स्विचिंग इंपल्स और द लाइटनिंग इंपल्सेस? क्योंकि दिस इज अ पावर ट्रांसफार्मर. रिमेंबर, इन अ पावर ट्रांसफार्मर द मेन प्रॉब्लम इज द इंपल्सेस. अगर आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक किसी भी ट्रांसफार्मर पे नहीं भी होती, तब भी कोई भी ट्रांसफार्मर, मिसाल के तौर पर लोड शेडिंग हो गई, एक ग्रिड स्टेशन बंद कर दिया, आपने जब उसको ऑन करना है तो बेसिकली यू आर एक्चुअली गोइंग टू हैव अ फुल स्विचिंग इंपल्स अप्लाइड ओवर देयर. तो वो इंपल्स तो आनी है. उसको रोकने के लिए हाउ दिस वाइंडिंग इज हेल्पफुल. सर ये ग्रिप ज्यादा ग्रिप तो ठीक है, ये तुमने वो टेप बॉल वाली मैकेनिज्म बना दी कि जी ऐसा ऐसा छोटा कर दे जाओ उसको, वो ठीक है. ग्रिप ठीक है, एवरीथिंग इज गुड. बट व्हाट अबाउट द इनपुट कैपेसिटेंस? Whenever you were talking about the capacitance, I told you, if I go back on this over here, your transformer was having a resistance plus this one plus then the core over there. I'm not concerned with that core, but this was a capacitance over here. What you have done, when you have made this winding over there, you have sectionalized the whole winding in 5 different points. First, second, third, fourth, fifth. The first one over here, the fifth one, इसकी इनपुट कैपेसिटेंस ज्यादा है. कैपेसिटेंस किसके साथ होगी? ग्राउंड के साथ है ना. ग्राउंड क्या है? कोर है. कोर कहां पे आपकी? यहां पे ऊपर. तो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वाइंडिंग टुवर्ड्स द कोर ज्यादा है. सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. D डिस्टेंस ज्यादा है, कैपेसिटेंस. हाँ, कोर न्यूट्रल शील्ड के ऊपर है, वो ऊपर वाली योक.
योक योक क्या हो गया? देखो ये आपके पास तो दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। तो यहां पे आपके पास so you are actually saving your winding from that impulses। तो आपने क्या किया इसके अंदर, इस पूरे RLC सर्किट वट एवर यू कैन कॉल इट, इसको आपने सेक्शनलाइज कर दिया, 4-5 डिफरेंट वैल्यूज, ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज सर्टेनली बिकॉज सारी वाइंडिंग सीरीज में, प्लस दैट इम्पैक्ट ऑफ दैट के जी वो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा है उसका, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट सेंस यू हैव दैट डिक्रीजिंग डाउन। So your assignment would be something like this, that you have to actually talk about all these windings। ये नाम मैं बता रहा हूँ, इनका थोड़ा थोड़ा just one page you have to write down on them, but some authentic source। Please at the end of your assignment, please do write down the reference from where you have taken it, website link or whatever, document name or application note from where। Hint is this, go to Google Books and try to find out from there। There are some books, पूरी बुक तो नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स, कोई 1-2 चैप्टर मिल जाते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। हाँ वर्ड, मेक इट अ वर्ड फाइल, मेक इट अ वर्ड फाइल, बट सबमिट इट इन PDF फॉर्मेट, ठीक है? वो PDF फॉर्मेट में फिर हम आगे उसको देख लेंगे। दिस इज अनदर शील्ड वाइंडिंग, यू कैन सी दे आर लाइक 1 2 3 अनदर टाइप, अ लिटिल टेपर्ड लेयर, इसमें टेपर्ड है बेसिकली, उससे आपको और फायदा होगा। ये भी है, ये मैंने डॉक्यूमेंट अवेलेबल कर दिया है, ऑल दिस डिस्क ओवर देयर, ऑल दिस डॉक्यूमेंट, it has all the pictures of all the windings over there। This is another good picture of mitred core, आप देख सकते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कि आपके पास mitred core है, सर्कुलर शेप में आपने कोर को बना दिया इस तरह से। So there are some different windings, plus this is another winding, you can see the same disc winding done। So this is a big industry in Pakistan, this is a big industry। आप देख सकते हो एक ट्रांसफार्मर को बनाने में ठीक ठाक टाइम लगता है, ठीक ठाक टाइम, इतना आसान नहीं है। और आप देख सकते हो ये जो कोर है, इसकी कोर इसमें अभी रखी नहीं गई है, पहले डिस्क को बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसको कोर के ऊपर रखा जाएगा, फिर स्टैंपिंग की जाएंगी। बिग इंडस्ट्री वर्किंग ऑन ओवर देयर। अनदर टाइप ऑफ वाइंडिंग कॉल्ड एज स्पाइरल वाइंडिंग, बट अ मिक्सचर ऑफ डिस्क वाइंडिंग, क्योंकि आप देख सकते हो इसके अंदर ये स्टार्ट वहां से हो रही है, अगेन इट्स गोइंग अप एंड देन गोइंग डाउन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पाइरल coil winding because this is working in spiral over there। This is ring type और circular type एक ही चीज है, वही चीज है जो हमने पीछे लो वोल्टेज में किया था सिंपली, जिसमें ट्रांसपोजिशन हम कर रहे थे, circular type or whatever। These are some different types of here। ये आप देख सकते हो, again the transposition is being done on the same conductor, each crossover in continuous disc winding over there। So these are some different types of winding, you can see हम diagram पहले भी देख चुके हैं, ये 1 2 3 4 5 6, and after every transition you are having that conductor changing at different positions over there। And this is the chart from your R.K. Agarwal book। You can see the voltage ranges as you go up to 132 or 133 kV, you are actually having a disc winding or helix winding, ठीक है? The type of the winding goes on to disc or multi-layer winding for the high voltage also and for the low voltage also, ठीक है? क्रॉसओवर वाइंडिंग वही वाइंडिंग है जिसमें हमने पैकेट्स बनाए थे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, 6-7 पैकेट थे हमने, दैट वाज कॉल्ड एज द क्रॉसओवर वाइंडिंग, ठीक है? सो फॉइल वाइंडिंग इटसेल्फ एक अलग चीज है, उस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, नॉट एट प्रेजेंट। सवाल क्या, दोबारा बोला? हाँ, इनपुट कैपेसिटेंस देखो न्यूट्रल पॉइंट से आनी है। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है? वो आपका कोर भी हो सकती है, वो आपका वाई कनेक्टेड पॉइंट भी है जहां पे ऊपर है, आपका ऑयल का जिस टैंक के अंदर वो टैंक भी न्यूट्रली ग्राउंडेड है। हाँ, वो पहले वाले शील्ड के अंदर पहले वाले उसके साथ आ रही है आपके कैपेसिटेंस, उनके अंदर भी था, बिल्कुल। देखो एक कैपेसिटेंस ये है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इस पे आ जाऊं, एक कैपेसिटेंस ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक कैपेसिटेंस ये भी है, ठीक है? वो जो पैकेट के दरमियान में कैपेसिटेंस है वो ये ऊपर वाली कैपेसिटेंस, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इस रेजिस्टेंस को बेसिकली एक ये, फिर उसके बाद एक ये, तो इसकी अपनी कैपेसिटेंस है, इसकी अपनी कैपेसिटेंस है। हम लोगों ने जो अभी तक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट इन योर अंडर ग्रेजुएट टिल नाउ यू हैव डन, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट,
but actually interwinding capacitance, inter-turn capacitance और the capacitance with respect to the core, वो सारी चीजें आपने ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है. And they will be in something in picofarads or nanofarads something value. बहुत बड़ी capacitance नहीं हो सकती है because it's through air certainly and or it's the oil included over there. ठीक है जी. So this is some number of terms over there. ये खैर आप देख सकते हो इंडियन मटेरियल है, ये हिंदी में लिखा हुआ है. I can't understand this at least. So and this is a something which is being done at present. ये और तो 3 साल पुरानी बात है ये. This is a planar transformer. आपने PCB के ऊपर इसकी टर्म्स दे दी हैं and this is a ferrite core. तो आपको प्रैक्टिकली कॉपर यूज करने की जरूरत नहीं है. कॉपर as such in terms of as a conductor, circular or rectangular. This is type of a planar transformer. एक plane के ऊपर आपका पूरा का पूरा transformer work कर रहा है. So this is you can see this is the same planar transformer working over there. This is another type. Just whenever you are working on this one, so try to get. I will make this available. This is all the disk winding and all that stuff available over here. Okay, coming on to our work. Now coming back to this one, 11 cross 4.7. ये क्यों लिया है? क्योंकि हमने disk winding बनानी है. So the width versus the depth, it should be double something, more than 2 times. So आप देख सकते हो 4.7 is the width, depth is 11. So you can see 11 आपकी साइड जो है वो हम उस तरफ यूज करेंगे, 4.7 आपकी रेडियली आउटवर्ड होगी. So I am using 11 into 4.7 cross 2. So 11 into 4.7 minus 0.86 क्यों कर रहे हैं बताएगा? राउंडिंग ऑफ द एजेस, ठीक है, याद है ये. प्लीज ये वैल्यू जरा याद जरूर रखना, क्योंकि आपके पास एरिया कितना माइनस करना है वो आपको वो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था जहाँ पे वहाँ पे ये minus 0.86 multiplied by 2 because I am having 2 conductors, so the area becomes 101.68. So the actual working current density is 262.4 divided by 101.68. So this is 2.58 amperes per square millimeter. Next thing, calculation of the core diameter. Now voltage per turn, same thing, 11,000 divided by under root 3 into 230 over there. ये 230 कहाँ से आया? ये एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग है. I guess it has been missed over here. I have not scanned it, but just for those who are on here, the same formula ET is equal to K under root Q is used. K is kept as over here as 0.39. ठीक है. अब ये 0.39 क्यों रखा गया है? This is a power transformer. As I told you, it is going to work for like 24 hours a day, 365 days a year. So the value is going to be something in the range of 0.3 to 0.45. ठीक है. So it's not going to be on the higher side. Distribution side में आपने higher रखा था उसको, क्योंकि वहाँ पे आपके पास it was like not working for over there. तो power transformer है, उसको आप off भी कर सकते हो, but it is going to work more over there. So this is 0.39. And inside it, since this is a 5 MVA transformer, so converting it into KVA, आपको याद होगा Q value was the rating of that transformer in KVA. So 0.39 into 5,000, the value comes out to be 27.577. This was the volts per turn. That was ET. So when this is ET equal to this one, and you want to find out the number of secondary turns, what is the secondary voltage? Secondary voltage, as we have done previously, that this is equal to 6351 volts. So this will be divided by that 27.577, and certainly after the approximation, this value comes out to be 230 turns. Yeah, after approximation, 229 point something. Q आपका ट्रांसफार्मर कितने MVA का है? 5 MVA का. Converted into KVA, this is a 5000 KVA transformer. इस फार्मूले के अंदर आपके पास Q हमेशा KVA में आ रहा था, क्योंकि अंडर रूट 3 प्रूफ में भी था अंदर. ठीक है. So this is that 5000 working over there. So this is 230 turns over here. So these 230 turns. So when I am going to use this 230 turns, this is that 230. ये जरा मिस है यहाँ पे, स्कैन नहीं हो सका from page number 235 over here. So the voltage per turns, now when you use 230, ठीक है, 230 is the exact value after when you have done the approximation. So the voltage per turn or ET instead of 27.577, which is just done that, is equal to 27.61. ये हमारी वर्किंग वोल्ट्स पर टर्न है, क्योंकि हमने 229 पॉइंट समथिंग वैल्यू नहीं लिया, हमने उसको राउंड ऑफ करके 230 पे लेके गए हैं. So this is 27.61.
Flux density as assumed 1.6 Tesla. So the gross area, the same formula we have done previously also. So this is ET into 10 raised to power 4 divided by 4.44 into F into BM into 0.97. 0.97 is the stacking factor. Okay? Yes, over here. So with the gross area that comes out to be 801.35 square centimeter. You can convert this one into your millimeter square also. It's totally up to you. Then afterwards, when you have done this, let me just find it out. So when you have done this one, इन्होंने कहाँ से इसमें से उठा लिया एक सेकंड एक वैल्यू आपकी ये तो मैं नंबरिंग इसकी थोड़ी सी मैंने okay so the approximate core diameter that comes out to be pi d squared divided by 4 into 0.95 is equal to 801.35 the area over there. So the area diameter that is actually equal to 328 millimeter. This is a huge diameter. अगर आपको याद हो तो आपका जो पिछला ट्रांसफार्मर था उसका डायमीटर कितना था जो हमने 100 kVA बनाया था 118 or 120 I guess it was something near about. So you can see this is approximately even double than that. वो 100 kVA था. This is a 5000 kVA or 5 MVA transformer over here. So this is the 328 millimeter is the diameter. अब इसके बाद the core design steps and all that calculation they have not done in this book, but if it is asked you will just repeat that design which we have done previously for the 100 kVA transformer design or the other one. एक second, just let me make this a little large. We can't actually see it being done over here. Okay, the next thing यहाँ भी तो नहीं है. Actually can't find. Just let me. Okay, we're already on the output. Okay, this one. Sorry, ये actually मैं scan नहीं वैसे ही. Okay, first of all, low voltage coil disk details and the high voltage coil disk details. Both windings are disk winding. Number of low voltage turns हमें पता चल चुके हैं. They are 230 turns. ठीक है जी. Now, number of disk being selected. ये बड़ा important point है यहाँ पे. आपने कितने disk select करने हैं? It's totally up to you. Here in this case, they have selected 60 disks, and if you do 60 disks, number of turns per disk आते हैं 3.8333, and that 0.8333 is actually 10 over 12. So I can write this 3.8333 as 3 whole number 10 over 12. And the reason, if you read this one over here, generally turns per disk are taken as a fraction of 12. Just I told you, that is 12 blocks per circle, either 9 over 12, 10 over 12, 11 over 12, or whatever that value. So this is done in view of the staggering the location of transposition in two consecutive disks, as well as making coils in 12 equidistant insulated blocks. तो आप उसको अलग अलग डिफरेंस पे कर रहे हैं ताकि आपके पास पूरी 12 जो टाइम्स हैं या 12 आपके पास जो पॉइंट्स हैं जहां पे आप ट्रांसपोजिशन करेंगे. सो यू विल हैव ईच टर्न पर डिस्क हैज 3.833 और एक्चुअली 3 होल नंबर 10 ओवर 12 टर्न्स पर डिस्क. तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मिल रहा है कि आपके नंबर ऑफ डिस्क बीइंग सिलेक्टेड, यू हैव टू सिलेक्ट इट व्हाटएवर नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड, इट शुड बी समथिंग फ्रैक्शन ऑफ दैट 12. तो आपके पास 0.833 भी हो सकता है, यू कैन टेक समथिंग 3 होल नंबर 9 ओवर 12 भी हो सकता है. इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है. तो नंबर ऑफ डिस्क, बट जो नंबर ऑफ डिस्क आप यहां सिलेक्ट करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नंबर ऑफ डिस्क यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, द हाई वोल्टेज डिस्क आर गोइंग टू बी क्लोजर टू दैट वैल्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज इन अ पावर ट्रांसफॉर्मर आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एम्पेयर टर्न बैलेंसिंग. एम्पेयर टर्न बैलेंसिंग, व्हाट इट मीन्स बाय, एक छोटी सी एग्जांपल इफ आई कैन टॉक अबाउट इट. इफ दिस इज द कोर, दिस इज दैट कोर व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. मेरे पास सबसे पहले क्या आएगी? लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज डिस्क वाइंडिंग. सो व्हाट आई विल डू, लेट मी जस्ट मेक इट. दिस विल बी फर्स्ट डिस्क, सेकंड डिस्क, थर्ड डिस्क. फर्स्ट डिस्क turns over there, this will be second disk, third disk, and in this way I will complete this whole low voltage winding. उसके बाद I will have a gap, certainly an oil duct gap. Then afterwards I will have the high voltage winding disk, or high voltage winding having a less current but higher number of turns. So what I will have, again a disk, and it will be having something like this. So I will have this one disk, and then afterwards I will have another disk over here.
like this, then I will have another disk over here like this, and then I will have another disk over here like this. So you have like many number of disks. Now ampere turn balancing means कि आपके पास ये जो पूरा ट्रांसफार्मर है, जब इस पूरे ट्रांसफार्मर को आप let me just change this color back to green. When you have this whole transformer completed over here, ये आपके पास the whole length comes out to be, supposingly it is equal to 1 meter. For example, ampere turn balancing means that if you have a transformer with a core height of something 1 meter, you are going to make sections 3 of these. इस एक सेक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स लो वोल्टेज साइड पे हैं, उतने ही नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स हाई वोल्टेज साइड पे होने चाहिए. Why? Because ये blue color windings and the red color windings, they are going to apply pressure on the core whenever there is a short circuit or fault current. Similarly, in the second section same thing, and in the third section same thing. जितना बड़ा ट्रांसफार्मर होता जाएगा उतने ज्यादा सेक्शनिंग आपको करनी पड़ेगी. इफ यू हैव अ 1 मीटर ट्रांसफार्मर, 1 मीटर मीन 1000 मिलीमीटर. 1000 मिलीमीटर मीन्स कि आपके पास 333 मिलीमीटर के 3 सेक्शंस बनेंगे. हर सेक्शन के अंदर आपको देखना यह है कि जितने नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स N1 I1 शुड बी इक्वल टू N2 I2 विद सम सर्टेनली सम टॉलरेंस दैट हैज टू बी डन. अगर ये नहीं होता, मिसाल के तौर पर अगर आप एम्पेयर टर्न बैलेंसिंग नहीं करते, नुकसान क्या होगा? यहां पे आपके पास लो वोल्टेज के एम्पेयर टर्न सपोजिंगली कम है, हाई वोल्टेज साइड के ऊपर एम्पेयर टर्न ज्यादा है. दे आर गोइंग टू एक्सर्ट अ प्रेशर बिकॉज दिस इज अ डिस्क वाइंडिंग. कहीं पे आपका कोर अंदर प्रेस हो रही होगी, कहीं पे कोर को बाहर प्रेस किया जा रहा होगा. तो व्हाट विल हैपन, वन वाइंडिंग इज गोइंग टू ट्राई टू डिक्रीज द फोर्स, अदर वाइंडिंग इज गोइंग टू इंक्रीज द फोर्स. आपने ऑटोमेटिकली डिजाइन करते वक्त दोनों के दरमियान में मिस मैनेजमेंट रखी हुई है, तो एक चीज इन अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कंप्रेस करेगी, वाइंडिंग वहां से कोलैप्स कर जाएगी. क्यों? व्हेनेवर अ ट्रांसफार्मर इज एट लोड, यू रिमेंबर इट, प्राइमरी साइड के ऊपर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको कैंसिल करने के लिए सेकेंडरी फ्लक्स होता है कोर के अंदर. सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर व्हेन इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. व्हेन शॉर्ट सर्किट इज देयर, सेकेंडरी साइड पे शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट बढ़ा, प्राइमरी साइड पे भी करंट बढ़ेगा, तो दोनों वाइंडिंग्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है. अब दोनों वाइंडिंग्स के अंदर करंट उतना ही है जितने एम्पियर टर्न्स है इन दैट रीजन. वाइंडिंग्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. अगर कैंसिल आउट नहीं कर रही होंगी, आपने ज्यादा टर्न्स हाई वोल्टेज साइड पे कर दिए, लो वोल्टेज पे कम थे, तो हाई वोल्टेज साइड इज गोइंग टू क्रश द लो वोल्टेज वाइंडिंग और गोइंग टू ब्रेक आउट. सो एम्पियर टर्न बैलेंसिंग, अब किसी भी लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैं बात करता हूं जो हमने भी पढ़ा है पिछले वीक्स में, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर कभी भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, द वाइंडिंग बस्ट आउट और दे क्रश द कोर. लेकिन पावर ट्रांसफार्मर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. वहां पे आप यू कांट अफोर्ड अ डिजास्टर. बहुत रेयर ही सुना होगा पाकिस्तान के अंदर कभी की जी ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर कभी उड़ गया हो. बहुत रेयर होता है लेकिन बहुत रेयर होता है, और उसकी खैर खबर नहीं लगने देते, उसको किसी और खाते में डाल देते हैं और फिर उसके बाद उसको शो किसी और तरीके से कर दें, वो लिखला नहीं है. बट दिस हैपेंस एंड यू हैव टू सेव दैट पावर ट्रांसफार्मर इन एनी केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट और एनी फॉल्ट करंट. दिस इज कॉल्ड एज एम्पेयर टर्न बैलेंसिंग. ठीक है. सो ये एम्पेयर टर्न बैलेंसिंग करने के लिए द नंबर ऑफ डिस्क whatever you are selecting, this 60 disk, and if I go towards the high voltage side you can see the number is 68. अब आपने ये 60 और 68 दोनों एक जैसे नहीं है, नंबर भी डिफरेंट है और उनके जो कंडक्टर इस्तेमाल हो रहा है वो भी डिफरेंट है. इस तरह से अभी मैंने आपको यहाँ पीछे देखा था, अभी जस्ट नाउ, ये भी आज के लेक्चर के बाद अगला लेक्चर है, उसके अंदर आपने ये देखना है. हम उसको सेक्शनलाइज करेंगे कि एक सेक्शन में कितनी है, सेकंड सेक्शन में कितनी एम्पेयर टर्न है, थर्ड सेक्शन में कितनी एम्पेयर टर्न है. वो सारे एम्पेयर टर्न आपको ऐड अप करने होंगे. ये पूरा डिजाइन का हिस्सा है. अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टुवर्ड्स द हाई वोल्टेज, मैंने भी हाई वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स नहीं निकाले थे. लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट वन. आ गया, ओके ओके, एक सेकेंड. ओके, number of primary turns at the normal tap, same thing, nothing special. 33 divided by 11, ये अंडर रूट 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, कोई बताएगा? 33 तो डेल्टा में है,
11 kV is in actually in Y, star connected. So it is 11 under root 3 divided by under root 3 for the phase voltage. तो वो नीचे under root था, ऊपर चला गया, so this is under root 3. So number of primary turns at the normal tap, you will calculate this, and this comes out to be 1195 turns. Now additional turns taps की वजह से कितनी add up हो रही हैं? Maximum कितनी है? Plus 7.5%. So you will add 1195 multiplied by 0.075. This will give you the additional number of turns. ठीक है, जो आपने additional करनी है, क्योंकि आपके पास plus 7.5 and minus 7.5 का taps है. So this is 90 turns. So what this means actually, listen this carefully. मेरे पास एक high voltage winding है. This is the high voltage winding and certainly this is the low voltage winding. मेरे पास 90 turns यहाँ पे हैं, इसी तरह से 90 टर्न्स यहां पर है, और जो मेरे पास टोटल टर्न्स बनी थी यहां पे 1195 टर्न्स यहां पे है. दिस इज माइनस 7.5%, दिस इज प्लस 7.5%. इसके बीच में 5 भी है, 2.5 भी है, माइनस 2.5 भी है, माइनस 5 भी है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द हाई वोल्टेज साइड कितनी हुई? 1195 प्लस 90. सो दैट फिगर comes out to be 1195 plus 90, 1285. Now this 1285 figure, इस 1285 figures में से कितने number of turns taps के अंदर जा रहे हैं? 90 plus 90. Agreed on this one? ये भी मैंने यहाँ पे प्रूफ किया आपके सामने कि 1195 plus 90 तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, उसमें से कितने नंबर ऑफ टर्न्स टैप में जा रहे हैं? दिस इज दैट 90 plus 90. सो 180 नंबर ऑफ टर्न्स आपके टैप्स में जा रहे हैं, यानी कि टैप्स उस एरिया में से निकलेंगे. अब ये क्यों बात कर रहे हैं हम इस वजह से, क्योंकि 180 नंबर ऑफ टर्न्स, उनके लिए जो हम डिस्क बनाएंगे दे विल बी कॉल्ड एज टैप डिस्क. द अदर वंस, फॉर द रिमेनिंग वंस, दे विल बी कॉल्ड एज प्लेन डिस्क. जस्ट लाइक इफ यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, वी हैड प्लेन पैकेट और डिस्क टैप पैकेट्स ओवर देयर. Same thing done over here. You are having tap packet or tap disk over here or the plain disk over there. So when I talk about this one, high voltage coil details, I have 1285 turns. Number of disk I select at 68. Now out of 68 disk, ये बड़ी important है, out of 68 disk, 12 disk will be made tap disk, each having 12 turns per disk. 12 into 15 कितना होता है? 180. सो इसका मतलब यह है कि 68 में से 12 टर्न्स और 12 डिस्क आर टैप डिस्क एंड द रिमेनिंग 56 डिस्क आर द प्लेन डिस्क ओवर देयर. और उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? दे विल बी 1285 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 56. सो द बैलेंस 56 प्लेन डिस्क ईच हैविंग 19 9/12 टर्न्स पर डिस्क. अब यहां पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन, ये 68 कहां से आया है? ये आपको बैक कैलकुलेशन पहले से करनी होगी, ताकि आपके पास दिस 19 9/12 प्लस दिस 15 टर्न्स पर डिस्क, देयर सम कम्स आउट टू बी 1285 टर्न्स. ये आपको बैक कैलकुलेशन पहले करनी है. बट कीप दिस इन व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 68 एंड 60, आप इसको 50 और 59 भी कर सकते थे, इसको 70 और 78 या 90 भी कर सकते थे. दिस शुड बी क्लोज टू ईच अदर. अगर ये क्लोज नंबर नहीं होगा तो एम्पेयर टर्न बैलेंसिंग में यू विल हैव प्रॉब्लम. ठीक है, सो यू विल हैव टू डू दिस 12 कैलकुलेशन. सो टोटल टर्न्स पर फेज 15 to 12, 12 डिस्क हैं 15 टर्न्स की, 56 डिस्क हैं 19 होल नंबर 9/12, यानी कि 19, दिस इज 19.75 आई गेस, यस 19.75 टर्न्स पर ईच डिस्क. So when you add them together, this comes out to be 1286 टर्न्स. हमें कितनी रिक्वायर्ड थी? 1285. अब 1285 करना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज इट्स नॉट डिविजिबल बाय 12. तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे इस बुक में, दे हैव डन इट 1286 टर्न्स. अब उस एक टर्न के इजाफे से जो नुकसान होगा वो हमें देखना पड़ेगा इन अ टेबल which is called as let me just show that table. This is the table. You will have to find out the ratio error.
अगर आपको याद हो, हमें ये 100 kVA ट्रांसफार्मर के अंदर भी हमने रेशियो एरर निकाला था कि हमें जो चाहिए और हमें जो मिल रहा है. सो दिस इज प्लस 7.5% टैप, 33 मल्टीप्लाइड बाय 1.075 मल्टीप्लाइड बाय √3 किसका है? 11 का, ऊपर चला गया उसी तरह. सो द वोल्टेज रेशियो इज 5.586. टर्न रेशियो कितना है? 1285 नहीं है, अब 1286 है, डिवाइडेड बाय 230, द रेशियो इज 5.591. अब दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, टेक बेस ऑफ एनी वन वैल्यू, दिस विल गिव यू द एरर. ठीक है. सेम थिंग अप्लाइड ओवर हियर फॉर ऑल दी 7 टैप्स. एक्चुअली 6 टैप्स है, न्यूट्रल वन जो 0% वैल्यू है, दैट इज द 4th टैप. So here in every one 30, 30, 60, 60, 30, 90, 90, 30, 120, 120 plus 30, 150, 150 plus 30, 80. हर टैप के अंदर 30 टर्न्स हैं. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. आपके पास कितनी डिस्क हैं जिसमें से टैप्स निकल रहे हैं? दे आर 12 डिस्क. दे आर 12 डिस्क और हर डिस्क के अंदर 15 टर्न्स है. आप देख रहे हो यहाँ पे 30, 30, 30 का डिफरेंस है. व्हाट दिस मीन्स एक्चुअली कि कुछ में से टर्न्स निकल रहे होंगे, कुछ में से टैप्स नहीं निकल रहे होंगे. बट दैट्स एन अमलगम ऑफ 12 डिस्क ओवर देयर, एंड आउट ऑफ दोस 12 डिस्क there will be how many wires coming out? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wires coming out. But that will be a section of the tap disk which will be having number of disks equal to 12 and the number of turns per disk equal to 15 turns. Okay? Please do this back calculation yourself. This is very, very important that you have an idea that how this is done. That's why number of low voltage disk is done first. Whatever number you select, आप 50 भी कर सकते हो, 70 भी कर सकते हो, it's totally up to you. But जितना ज़्यादा आप number of turns per disk रखोगे, उतना mechanically the labor और the worker मुश्किल में आएगा. आप इसको 25 भी रख सकते हो, लेकिन उससे नुकसान ये होगा, आपके ट्रांसफार्मर की विड्थ बढ़ेगी. जब विड्थ बढ़ेगी, कोर विड्थ बढ़ेगी, ट्रांसफार्मर बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर का आयरन वेट बढ़ेगा. Many things are actually changing over here. Any questions up till this, John ji? चलिए जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है ये पूरे ट्रांसफार्मर के लिए है, एक कोर के लिए, एक कोर के पोर्शन के लिए नहीं, मतलब हम वहां पर जो 3 फेज ट्रांसफार्मर उसमें से एक फेज के हैं, ये एक फेज कोर्स हम पर फेज वोल्टेज को लेके चल रहे हैं. ET was equal to K under root Q, वोल्ट्स पर टर्न. वोल्ट क्या लिए थे हमने वहां पे? 6351 volts, 11 kV divided by under root 3 per phase voltage. ठीक है. ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर, whenever they are analyzed on per phase basis. When they are designed, they are always designed on per phase basis. ठीक है. Remember this thing. Okay. Any questions जी? Low voltage coil formation. फॉर्मेशन ऑफ लो वोल्टेज कॉइल, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज? 230 है. इसमें कोई टैप्स नहीं है, कथिंग कुछ भी नहीं है, सो इट्स वेरी इजी थिंग. नंबर ऑफ डिस्क पर फेज कितने हैं? 60. नंबर ऑफ टर्न्स पर डिस्क कितनी है? 3 होल नंबर 10/12. कंडक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं वो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, 11 × 4.7. ये हमने कैसे सिलेक्ट किया? द रीजन इज के विड्थ साइड एंड द डेप्थ साइड दे बोथ शुड बी एट 2 times more than that. So 4.7 multiplied by 2 is something 9.4 something. So it is more than that. So 11 cross 4.7 into 2. अब ये 2 को आपने अरेंज कैसे करना है? Either you are going to arrange them parallel, either you are going to arrange on top of it. Now disposition of the conductor. कोई बताएगा मुझे ये 1 width into 2d ये किस तरह से है? Are they in parallel or are they on top? जी 1 width into 2d. D रेडियली होता है. अच्छा, d going out. So this means you are actually placing one on top of each other. D. No sir, D रेडियली होता है ना, तो 1d और 2d. रेडियली किसे कह रहे हो हम? एक सेकेंड, let me just go on to this one. If this is the core, ठीक है जी, this is that core I am talking about. अब मैं यहाँ पे आपके पास ये एक कंडक्टर,
ये एक कंडक्टर और ये दो कंडक्टर ऐसे रख रहे हैं, या फिर जी फर्स्ट वन, दिस इज D, this is width going down, so this is W, this is D, this is 1W cross 2D as written over here. ठीक है, so we go back on this one, so this is 1W into 2D. Conductor size, अच्छा, one thing very important, this is a power transformer, so TPC is done. TPC means मैंने बताया था पेपर कवरिंग, का T का क्या मतलब है? Thrice or triple paper covering, whatever you can call it. So the thickness is 0.5 mm. ठीक है, अब इसमें एयर गैप्स आएंगे, जितने पेपर आप बढ़ाते जाएंगे ऑफ कोर्स उसको आपने कंप्रेस थोड़ी करवाना है, तो आप ऑफ कोर्स उसको जब करेंगे तो एक का पेपर कवरिंग की थिकनेस थी 0.1, लेकिन जब आपने 3 दफा उसको चढ़ाया है, एंड दिस इज अ पावर ट्रांसफार्मर, द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज ऑल्सो लार्ज, सो द पेपर कवरिंग आपने यूज करनी है, वहां पे उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए. So that's why you are using a 0.5 mm over there. So 11 into 4.7, the conductor comes out to be 11.5 into 5.2 mm over there. 0.5 आपने हर तरफ से ऐड कर दिया. Covered conductor size 11.5, 5.2. Disposition as we all know, lengthwise this is W, नीचे की तरफ, ठीक है, कोर की lengthwise. Depthwise this is 2D, ठीक है, ये एक टर्न बन रही है. Size of the covered conductor 2 in parallel. So this is 11.5 into 60. What this means कि मेरे पास let me just remove this one. 1 2 3 4 5. So you are increasing it lengthwise going down. So you are increasing it 11.5 multiplied by 60. So you are increasing it 11.5 into 60. Why 60? 60 डिस्क है हमारे पास, डिस्क 60. किसका? 2W plus 1D. क्या फायदा होना था? 2W, ओके, लेंथ बढ़ जाएगी, उसका क्या करेंगे? अभी हमने हर डिस्क के दरमियान में फासला रखना है, जो हमारी बेसिक एग्जांपल है. अगर आप इसमें 2W कर दो, अब ये डिपेंड करता है, अब हाँ इस ट्रेड ऑफ. पावर ट्रांसफार्मर के अंदर क्योंकि परसेंटेज Z 7.15 है, तो आप उसको थोड़ा चौड़ा बना सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर आपको परसेंटेज Z कम रखनी है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा लंबा ज्यादा रखते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई जब भी मैं आपको साइज ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करता हूं, आपसे कहता हूं कि ये इस कमरे के साइज के बराबर है, तो इसका मतलब ये कि वो विड्थ वाइज बहुत बड़ा है. ठीक है, so this is 11.5 into 60, so this is 690 mm. Depth 10.4 over here. Depth क्यों 10.4? दो हैं 5.2 के, so this is 10.4 into 4. ये बताएगा क्यों ये 4 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थे? नंबर ऑफ टर्न्स पर डिस्क 3.8333, तो राउंड इट ऑफ, इट्स 4. ठीक है, तो हम वहां तो ही पॉइंट पे रख सकते ना, वो तो हमारे पास वहां पे जगह उतना, कहीं पे आपने टर्न पूरा कल यहां खत्म कर दिया, कहीं यहां खत्म कर दिया. प्रैक्टिकल थिकनेस तो उसकी 4 ही है, सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 4. सो दिस इज 41.6 mm. राउंड इट ऑफ, दिस कम्स आउट टू बी 42 mm. देन आफ्टरवर्ड्स लो वोल्टेज कॉइल इनसाइड डायमीटर. कोर डायमीटर हमने पहले निकाला था 328. 25 mm is the thickness of the asbestos or the ring which is going to be placed on the core, जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग करनी है, जिस पे आपने पूरे डिस्क चढ़ाने हैं. So 25 mm is that thickness. So this comes out to be 353 mm. Then low voltage coil inside diameter plus 2 into radial build. Radial build हमने अभी यहाँ निकाली है 42 mm. So this is 353 plus 2 into 42. So the answer is 437 mm. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लो वोल्टेज कॉइल का आउटसाइड डायमीटर है दैट इज 437 mm. अब इसके अंदर हमें लो वोल्टेज कॉइल के बाद एक ऑयल डक्ट देनी है, उस ऑयल डक्ट के बाद हमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार्ट करनी है. बट बिफोर दैट वी स्टिल हैव नॉट फॉर्मुलेटेड के लो वोल्टेज कॉइल की लेंथ कितनी है.
हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि कितने डिस्क, हमें पता है कितनी डिस्क हैं, लेकिन हर डिस्क के दरमियान में फासला कितना है वो हमें नहीं पता. नाउ हियर frankly speaking there is as such no data available even with me कि ये डाटा कहाँ से निकाला गया है. So this is totally value which will be given to you even in the exam if it is given to you, or you can copy this value. How this is done? Just see this value. Spacer block between the first and the 13th disk. First से लेकर second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. पहली 13 डिस्क के अंदर गैप है 3 mm का, करीब करीब है, ठीक है. देन आफ्टरवर्ड 13th एंड 15th के अंदर 9 mm का फासला है. देन आफ्टरवर्ड 15th एंड 16th में 15 mm का फासला है. देन 16th एंड 18th 9 mm का फासला है. देन आफ्टरवर्ड 18th एंड 43rd डिस्क 3 mm का फासला है. देन आफ्टरवर्ड this is repeated symmetrically. After 25 again this is 3, 9, 15, 9, 3. So what is happening if I draw this one over here on this chart, and let me make it another one. So if I have this one, this is the core. So ये आपके पास डिस्क, ये और करीब, फिर थोड़ा सा फासला, then afterwards a little bit more, and then afterwards when you are having this is the core, so they are coming closer. So what is happening? You have more spacing in the center than at the top. Now ये value जो आपको यहाँ दिखा रही है, this value if you change this value, आपको जी मैं इतनी तरदुद में नहीं पढ़ना, मैं ऊपर 3 रखा हुआ, 9 रखा, 15, 9 इस तरह से नहीं रखता, मैं सबको 4 mm कर देता हूँ. The problem would be that when you will be doing the ampere turn balancing, that will be not done. Why ampere turn balancing? As I have told you, the longer the transformer, you have to make more sections, and in that each section, ampere turns of the low voltage, ampere turns of the high voltage, they both should be with some tolerance equal to each other. So ये value यहाँ पे जो दी गई है 3 mm, 9 mm, 15 mm, 9 mm, ये किस तरह से है? लेट मी जस्ट गिव यू अ फिगर ओवर हियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज डन ऑन दिस वन. इफ यू कैन सी दिस वन, दिस इज सेक्शन नंबर 1 अप टिल दिस पॉइंट, ठीक है. इनफैक्ट लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट मोर गुड एग्जांपल. ये मेरे पास इसको एडिट करके मैंने रखा हुआ है. यस, दिस वन. सेगमेंट नंबर 1 ब्रेक लाइन. ये आपके पास लो वोल्टेज डिस्क है, ये आपके पास हाई वोल्टेज डिस्क है. आपका ये 15 mm का डिफरेंस जहां पे है, 2, 12, 13, 14, 15, 1, 2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टिल 12 कितना गैप था? 3 mm का. वो यहां शो कर दिया, यहां नहीं शो किया गया लेकिन दिया दिया. प्लस 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15 के अंदर 9 mm का गैप है. तो अब जितनी भी डिस्क आ रही हैं आपके पास 1 से लेके 15 तक, they will or their ampere turn should be equal to the high voltage disk which are coming from 1 to 17. यानी कि 15 डिस्क लो वोल्टेज की, 17 डिस्क हाई वोल्टेज की, दोनों के एम्पेयर टर्न्स बैलेंस आउट होने चाहिए. आपके पास कितनी टर्न्स थी? 60 थी, 68 थी. आपके पास एक्स्ट्रा कितनी है? 8. तो आप 15, 17, नीचे भी 15, 17, बीच वाले में आप थोड़ी और डिफरेंस रख लेंगे. So in this way you have to equalize the ampere turns on the primary side and secondary side, or the low voltage side and the high voltage side, keeping in view that now these are 3 sections. If it's a big transformer, ये 5 MVA बहुत छोटा ट्रांसफार्मर है. अगर ये इससे भी बड़ा ट्रांसफार्मर हो, then instead of just 1 section, 2 section, 3 section, आपको 5 या 6 sections भी बनाने पड़ सकते हैं. क्योंकि जितने ज्यादा sections आप बनाएंगे, you are actually confirming that your transformer can withstand a short circuit or a fault current. क्योंकि अगर आप इसमें देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे बहुत ज्यादा हाई स्टार्टिंग करंट या हाई शॉर्ट सर्किट करंट आता है, 1, 2 से लेके 12 तक फासला कितना है? 3. 1 से लेके 13 तक यहां भी 3 है, इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. हाँ, हाई वोल्टेज डिस्क की मोटाई में फर्क हो सकता है, लो वोल्टेज की डिस्क की मोटाई में फर्क हो सकता है. दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम. बट आप नीचे आओ तो यहां पे 9 mm का फासला है, यहां पे 10 mm का फासला है.
So if you are going to make more sections, it will be a difficult task to actually manage it, but it will be much better for your transformer risk analysis. This is called also as a risk analysis, KG transformer, if it is going to go under a short circuit test or a fault current, how it will actually work. Gee, any questions with this one? This is the total transformer. You can see this is the core. This gray area is the core. These are discs over here in this region. Okay, after this one, sorry. So this is the total length, total height. You can call it a total height of your 59 gaps. 60 है, 59 gaps होंगे, gaps 59 होंगे. It comes out to be 249 mm. Now, since this is a power transformer, we don't need air gaps in between it, so you are going to compress it. पूरे compressors available होते हैं just to press this all winding. So when you are going to press it in a compression, 7.5% reduction is possible. When you do it, that comes out to be minus 19 mm, so 230 mm is the height of the insulation. ये height of the insulation है, please important. This is the height of the insulation. So 230 mm plus that length which was 690 mm. 690 mm plus 230. So this is 690 plus 230, 920 mm. Almost 1 meter. 1 मीटर. इसीलिए मैंने आपको 1 मीटर की एग्जांपल पहले दी थी कि उसके 3 हिस्से आपने बनाने हैं. So you can see 920 mm is the total over there. So this is just the final detail. The final details of the low voltage coil are as under: total turns per phase 230, number of discs per phase 60, and all the data which we have just formulated. Since I don't have much time, please go through the formulation of the high voltage coil yourself. चीज वही है, just what you have to do, this is that same detail. You have to make a conductor size, length, width over here. यहाँ पे प्रॉब्लम सर ये है, यहाँ पे कुछ है plain disk, कुछ है tap disk. So you will get this data from this table. Please go through this one, because on the next class on Wednesday I will do the ampere turn balancing. This is very important. Okay. Any questions? सर पर से गुजरा है या कुछ समझ आई है? This is important because this is a power transformer. Okay. ये बंद भी हो गया? ये क्या बंद हुआ? वाओ, चल रहा है? Okay, anyway.